Are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 8, some properties of water. Here is some warm-up questions. Look at the pictures, write the states of water. So you can read about these things so you can do it by yourself. Here is, let's know about physical properties of water, water and water solutions, condition essential for making a solution, the common soluble and insoluble substances, the object that float and sink in water. So these are some topics we will discuss in this chapter. Here is, water is one of the most important substances on earth. It is found in water bodies such as oceans, seas, rivers, streams, lakes, ponds, and even under the ground. All plants and animals need water to survive. The human body is more than 3/4 water. If there was no water, there would be no life on earth. So बच्चे जो water है वो बहुत important है हम सबके लिए और अगर water नहीं होगा तो life नहीं होगी और जो human body है वो भी almost 70% क्या contain करती है बच्चा water contain करती है. Here is some properties of water. Water has fixed volume. Water has no fixed shape. It takes the shape of the container where it is poured into, but it has fixed volume. Suppose you buy a 1 liter of mineral water bottle from the market and pour it into a 1 liter separate bottle back home, it will still remain 1 liter. This is because there is no change in the volume of water when it is poured into different container of the same capacity. It means student जो हमारा water है उसकी क्या होता है बच्चा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स शेप नहीं होती है. अगर आप उसे जग में फिल करेंगे वो जग की शेप ले लेता है, आप बोतल में फिल करेंगे वो बोतल की शेप लेगा. बट सपोज आपने कोई बोतल बाय की कि ये 1 लीटर वाटर है तो आप उसे किसी और बोतल में फिल करेंगे तो वो तब भी बच्चा कितना होगा 1 लीटर होगा. सो दैट मीन्स हमारे वाटर का जो वॉल्यूम है दैट इज फिक्स्ड. हियर इज वाटर ऑक्यूपाइज स्पेस. वाटर इज अ मेटल एंड हैज मास ऑफ ऑक्यूपाइज स्पेस. If you fill a balloon with water, you will notice that balloon starts inflating. This is because water occupies space. It means बच्चा water क्या करता है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. अगर आप किसी बलून को वाटर से फिल करते हैं तो बलून का साइज इंक्रीज होता है. सो दैट मीन्स वाटर ने क्या किया बच्चा स्पेस को ऑक्यूपाई किया. Here is water flow easily. Water flow from higher level to lower level. It flows and takes the shape of the container and once the container is full, it flows out of it. So बच्चे जो हमारा water है वो बहुत easily flow करता है higher level से lower level पे और वो किसी कंटेनर में फिल होता है और अगर सपोज कंटेनर फुल हो जाता है तो वो उससे बाहर भी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. Water can change from one form to another easily. Water can change it from solid ice to liquid water and to gas water vapor. This happens when water is heated or cooled. Water बच्चा अपनी स्टेट को अपनी स्टेट को चेंज करता है जैसे सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर्स में. बट कब जब हम उसे हीटेड या फिर कूल्ड करते हैं. Here is water solution. A solution is formed when 2 or more substances evenly mixed together. Solution क्या होता है बच्चा जब हम किसी दो सब्सटेंस को एक साथ मिक्स करते हैं. Solvent is a substance in which solute dissolve such as water, whereas solute is a substance which dissolves in a solvent such as salt. That means बच्चा solvent क्या होता है जिसमें कोई चीज dissolve होती है. Okay, solute dissolve such as water. अब suppose कोई solute क्या होता है जो dissolve होता है. Okay, solvent जिसमें dissolve होता है. Solvent आपका water होगा, solute आपका salt होगा. Because salt किसमें dissolve होता है बच्चा आपके water में. Get it? Solute substances are usually present in lesser quantity, which solvent forms the largest component of a solution. So आपका जो solute होता है बच्चा वो present होता है कम amount में in comparison of solvent. Here is solute plus solvent is solution. Look here. Here is a picture. A solution is a mixture formed when one or more solutes डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट. तो आपका सॉल्यूशन कब बनता है बच्चे जब आप एक या एक से ज्यादा सॉल्यूट को किसमें डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में. लुक हियर. हियर इज अ पिक्चर. इन दिस पिक्चर वाटर सॉल्वेंट, sugar solute. Sugar solution is prepared. Okay student, do you know water dissolve more types of material than any other liquid. So जो आपका water है बच्चा उसमें most of the materials क्या हो जाते हैं dissolve हो जाते हैं in comparison of other liquids. Water is such good solvent that it can dissolve almost every solute and it is known as universal solvent.
सो बच्चा जो आपका वाटर है उसमें मोस्ट ऑफ द मटेरियल या सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज वेरी हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग आवर डे टू डे एक्टिविटीज. We use water for washing, cooking and making drinks like lemonade. So बच्चा जो ये प्रॉपर्टी वाटर की है वो हमारी बहुत हेल्प करती है हमारी डे टू डे लाइफ में. हम वॉशिंग में यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, ड्रिंक्स बनाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज condition necessary for making a solution. Look here, here is a picture. Look at this picture student. Heating the solvent, stirring the solution. या तो आप solvent को heat करें या solution को stir करें. Increase the amount of solvent. Solvent की जो amount है बच्चा उसको increase कर दें. Decreasing the amount of solute और अपने solute की amount को decrease कर दें. Here is grinding the solute material और solute material को grind करें. Okay, these are the some necessary conditions for making a solution. Here is an activity, dissolving sugar at different temperatures. So you can perform it in the guidance of your teacher. Okay, students. Soluble and insoluble substances. Soluble substances are those substances that can easily dissolve in a solvent. For example, salt, sugar, coffee, etc. gets completely dissolved in water. Soluble means बच्चा जो आपके substance है वो easily dissolve हो जाते हैं किसी solvent में, that is soluble substances. Insoluble substances are substances which cannot be dissolved in a solvent. For example, sand, chalk powder, sawdust, etc. does not dissolve in water. So बच्चा वो material जो आपके किसी solvent में dissolve नहीं होते हैं, that is insoluble. Here is an activity. Aim to find out whether the given substances dissolve in water. So what you have to do, आपको find करना है कि कौन सी substance जो है वो water में dissolve होते हैं. Method: to take equal quantity of water in a separate test tubes and mix a teaspoonful of each substance into each and stir well. If it does not dissolve, warm it gently. So what you have to do, you have to take different solutes and take a solvent water. आपको different टेस्ट ट्यूब में different आपके जो है सोल्यूट्स को डिसॉल्व करना है. अगर नहीं हो रहे हैं उनको हीट करना है और फिर आपको जो ऑब्जर्वेशंस होंगे यू हैव टू राइट दीज ऑब्जर्वेशन इन दिस ऑब्जर्वेशन टेबल. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड सिंक इन वाटर. Whether an object sinks or floats depend on its density. Everything is made up of molecules. Molecules are tiny particles that can only be seen with a microscope. So बच्चे आपके जो मैटर है वो किससे बना होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स, और मॉलिक्यूल्स उससे भी छोटे पार्टिकल्स है. ठीक है. Some objects have molecules that are packed closely together. Others have molecules that are packed more loosely. So बच्चे दो टाइप की ऑब्जेक्ट होती है, या तो उनके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं या फिर उनके मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं. दिस इज डेंसिटी. और ये क्या होती है बच्चा, डेंसिटी. ऑब्जेक्ट्स विद टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स आर डेंसर एंड सिंक. बच्चे जिन ऑब्जेक्ट्स के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं वो डेंसर होती है, दैट मींस उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और वो सिंक कर जाते हैं. अ पेपर क्लिप और अ कॉइन इज डेंस object and more loosely packed molecules are less dense and float. Wood, cork and sponge float. So बच्चे आपके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, और जिन ऑब्जेक्ट्स के जो है मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके वाटर पे फ्लो करते हैं. ओके स्टूडेंट, हियर इज वी हैव चेक एंड वेट. As you already read about these things, so you can do it by yourself. What we learn in this chapter, we will discuss it in a nutshell. Water is the most important substance on the earth. Water has fixed volume, occupies space, flow easily and can change from one state to another easily. A solution is formed when two or more substances evenly mixed together. If the solute is stirred in the solvent, the solution is formed quickly. Insoluble substances do not form solution when mixed with water. An object that weighs more than water sinks in water and that weighs less than floats in it. That means कोई ऑब्जेक्ट जिसका वेट बच्चे वाटर से ज्यादा होता है वो सिंक करती है और जिसका वेट वाटर से कम होता है वो फ्लोट करती है. ओके, हियर इज सम कीवर्ड्स. वॉल्यूम, कैपेसिटी, dissolve when a substance mixed with a liquid. Solute, the substance that dissolve in a liquid to make a solution. Solvent, the liquid in which a substance is dissolved. Okay student, thank you students. We will meet again in the next chapter.